Let us see the next question. On 1st of April 2017, ABC Mutual Fund issued 20 lakh units at the rate of 10 rupees per unit. So, number of units issued have been given and the face value is given. Relevant initial expenses involved were 12 lakhs. It invested the fund so raised in capital market instrument to build a portfolio of rupees 185 lakhs. During the month of April 2017, it disposed of some of the instrument costing 60 lakhs for 63 lakhs and used the proceeds in purchasing the securities for rupees 56 lakhs. Fund management expenses for the month of April 2017 was 8 lakhs, of which 10% was in arrears. In April 2017, the fund earned dividend amounting to rupees 2 lakhs and distributed 80% of the realized earning. On 30th of April 2017, the market value of the portfolio was 198 lakhs. Mr. Akash and investors subscribed to 100 units on 1st of April 2017 and disposed of the same at the closing NAV on 30th of April 2017. What was his annual rate of earning? That is a question. Friends, over here, the question is providing one of the information which is slightly new for us, that the mutual fund distributed 80% of the realized earning. इसका मतलब हमको ऐसा समझने का है, जो भी डिविडेंड इनकम मिला 2 लाख का, उसका 80% यानी 1,60,000 का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और ये जो कैपिटल गेन हुआ 3 लाख रुपए का, 3 लाख रुपए कैसे आए? 60 लाख का इन्वेस्टमेंट 63 में बेचा तो 3 लाख रुपए का कैपिटल गेन, ये 3 लाख रुपए और ये 2 लाख रुपए, यानी टोटल 5 लाख रुपए का 80% म्यूचुअल फंड ने डिस्ट्रीब्यूट किया, ऐसा हमको यहां पे समझने का है. आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू राइट एन आंसर. वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ amount of dividend income to be distributed. उसमें लिखो डिविडेंड इनकम इंटू 80%. Amount of dividend income is 2 lakhs. उसका 80%, that is 1,60,000. Working note number 2, calculation of capital gain income distribution. It is capital gain into 80%. कैपिटल गेन कितना हुआ? 63 lakhs minus 60 lakhs into 80%. That is 2,40,000. So we can say that capital gain income and dividend income per unit
उसका कैलकुलेशन हम लोग कर सकते हैं। कैपिटल गेन डिवाइड बाय यूनिट्स, डिविडेंड डिवाइड बाय यूनिट्स, $2,40,000 divided by 20 lakhs. That comes to 12 paise per unit. And this is 1,60,000 divided by 20 lakhs. That is 8 पैसे पर यूनिट। ऐसा करके हमको डिविडेंड इनकम पर यूनिट और कैपिटल गेन पर यूनिट फाइंड कर सकते हैं। आगे का आंसर आप कीजिए, फिर मैं करके देता हूं। एंड पुट योर आंसर इन द चैट बॉक्स। Now friends, over here basically we are required to make the calculation of return to the investor. Now return to the investor के लिए हमको एक इंफॉर्मेशन ये चाहिए कि इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर ने कितने रुपए में खरीदा था। तो लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन इज वेरी क्लियर कि यूनिट 10 रुपए में इशू हुआ था, तो ऑफकोर्स इन्वेस्टमेंट 10 रुपए में खरीदा था। डिविडेंड इनकम कितना मिला वो हमने कैलकुलेट कर लिया। कैपिटल गेन का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है वो हमने कैलकुलेट कर दिया। तो अभी एक चीज हमको फाइंड करने का है, क्या नेट एसेट वैल्यू ऑफ द यूनिट एट द एंड ऑफ द मंथ, यानी मंथ के एंड में एनएवी पर यूनिट क्या होगा वो कैलकुलेट करने का है। वो कैलकुलेट करने के लिए एक इंफॉर्मेशन हमको तो दे ही रखा है, क्या मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट। दूसरा इंफॉर्मेशन हमको दे रखा है क्या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, क्योंकि 8 लाख रुपए में से क्या हुआ 10% एरियर्स में है, यानी 80,000 रुपीज का लायबिलिटी। पर हमको और एक चीज इंपॉर्टेंटली यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा, दैट इज द कैश बैलेंस। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, वी विल मेक द कंप्यूटेशन ऑफ द कैश बैलेंस फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, क्योंकि कैश बैलेंस हमारे पास रेडीमेड नहीं है। अगेन शुरुआत से कहानी दे रखा है हमको कि 20 लाख नंबर ऑफ इशू है एट द रेट ऑफ 10 एंड सो ऑन। सो वी अंडरस्टैंड दैट से वी हैव टू प्रिपेयर अ वर्किंग नोट फॉर द कैश बैलेंस, उसके बाद नेट एसेट वैल्यू पर यूनिट, और उसके बाद हम लोग रिटर्न का कैलकुलेशन करेंगे। चलो वर्किंग नोट नंबर 3। कैलकुलेशन ऑफ कैश बैलेंस एट द एंड ऑफ द मंथ। In that we will have receipt amount, payment amount, opening balance is 0, फिर हमको ऐसा दे रखा है दैट से 20 लाख यूनिट्स इशू किए एट द रेट ऑफ ₹10, तो हम लोग लिख सकते हैं अमाउंट रिसीव्ड $20 लाख नंबर ऑफ यूनिट्स एट द रेट ऑफ 10, यानी कितना होगा 200 लाख। उसके बाद हमको दे रखा है इनिशियल इशू एक्सपेंसेस, इट इज एन अमाउंट ऑफ ₹12 lakhs। फिर हमको दे रखा है इन्वेस्टमेंट, it is 185 lakhs. During the month of April, it disposed of some of the investment costing 60 lakhs for 63 lakhs. Sale of investment 63 and used the proceeds in purchasing securities worth 56 lakhs. उसके बाद हम लोग लिखेंगे purchase of investment.
द फंड मैनेजमेंट एक्सपेंसेस 8 lakhs, उसमें से 10% बाकी है, तो वी विल हैव फंड मैनेजमेंट एक्सपेंसेस 8 lakhs minus 10%, that comes to 7,20,000. बस based on this information we have to compute the closing balance which will be useful to calculate the NAV, और उसके बाद हम लोग रिटर्न कैलकुलेट करेंगे. आई एम सॉरी, आई फॉरगॉट टू कंसीडर द डिविडेंड इनकम. इट इज एन अमाउंट ऑफ ₹2 lakhs, और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्निंग. In that case it is 63 lakhs minus 60 lakhs, यानी ये 3 लाख रुपए हुआ प्लस 2 लाख, यानी टोटल 5 लाख रुपए हुआ, और उसका 80%, यानी हम लोग कितना डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, दैट इज एन अमाउंट ऑफ ₹4 lakhs. So receipt side 0 plus 200 plus 63 plus 2, that is 265 lakhs. माइनस क्या करेंगे, 12 माइनस 185 माइनस 56 माइनस 7.2 माइनस 4, that comes to 80,000. That is the way we are required to make the computation of the closing balance. Which will be useful to make the calculation of the net asset value per unit. Try to do further answer on your own. So after making this calculation, working note number 4, calculation of NAV per unit. In bracket I am writing on 30th of September. Value of portfolio plus cash minus outstanding expenses divided by number of units. What is the value of the portfolio? It is an amount of 198 lakhs plus cash balance is 80,000 minus outstanding expenses are 8 lakhs into 10%, that is again coincidentally 80,000, divided by number of units will be 20 lakhs. तो कैसे होगा, फाइनली इट इज 198 lakhs divided by 20 lakhs, that is 9 rupee 90 paise per unit. This is the way the net asset value per unit can be found. और उसके ऊपर से फाइनली return will be found as dividend plus capital gain plus NAV1 minus NAV0 whole divided by NAV0 into 100. Dividend is 8 paise, capital gain is 12 paise, NAV1 is 9 rupee 90 paise, NAV0 was rupees 10, whole divided by 10 into 100.
फ्रेंड्स यहाँ पे रिटर्न हम लोग 100 यूनिट को लेके करेंगे या पर यूनिट करेंगे, वो सेम ही आएगा. वाई? बिकॉज द आंसर इज सपोज टू बी गिवन फाइनली इन परसेंटेज टर्म इंटू 12 डिवाइड बाय n, क्योंकि हमको एनुअलाइज रिटर्न देना है. सो इंटू 12 डिवाइड बाय 1, सो 0.08 प्लस 0.12 प्लस 9.9 माइनस 10, तो 10 पैसे का रिटर्न मिला ऑन 10 रुपीज इंटू 100 इंटू 12, दैट कम्स टू 12%. तो होल्डिंग पीरियड रिटर्न हुआ 1% और एनुअलाइज रिटर्न हुआ 12%. सो रिवीजन ऑफ द एंटायर आंसर. नया पॉइंट है डिविडेंड इनकम डिस्ट्रीब्यूट करने का, कैपिटल गेन इनकम डिस्ट्रीब्यूट करने का. कैश बैलेंस का कैलकुलेशन NAV1 के लिए, उसके बाद NAV1 एंड फाइनली बेस्ड ऑन दैट द रिटर्न इज फाउंड.